Okay, my dear students, let us start the transcription number 463. Be ready. 5 seconds. 4, 3, 2, 1. Sir, many farmers are not able to obtain the advantage of minimum support prices because procurement centers are sometimes at a considerable distance from their farms and villages. We intend to increase the number of procurement centers so that eventually every kisan will have access to a procurement center within 10 kilometers of his village. The rural roads network will also be strengthened in a phased manner. Kisans, particularly those engaged in the farming of perishable farm commodities, are often denied a fair share of the value of their produce because of the very perishability of their produce. The only answer lies in expanding rural godowns and cold or cooled storage facilities. To this end, a special program is being instituted for the extension of institutional credit on attractive terms for the establishment of cold or cooled storage facilities in rural areas. There is a scope for substantially improving credit facilities for the farm community. We propose 4 specific steps in this regard. First, we must rectify the problem of credit not being available to members of cooperatives because of the cooperatives to which they belong having become ineligible for NABARD refinance. We have decided to open with effect from the ensuing Rabi season a special line of credit of rupees 100 crores through cooperative and commercial banks which will be earmarked exclusively for scheduled caste and scheduled tribe farmers. Second, scales of finance for short-term production credit will be revised annually so that the credit made available to the farmer fully meets the recommended doses of inputs at current prices to meet his cultivation requirements. Third, a special credit regime is being instituted for kisans in rain-fed farming areas covered by watershed development programs. The new regime will operate on the basis of ensuring the availability of credit through a 3 to 5 year cycle so as to even out the inherent risks involved in good and bad monsoon years appearing in a cycle in such areas. The special credit regime will take into account problems of overdues which arise within a cyclical period to ensure an adequate flow of credit in support of viable crop production and other allied activities. This regime will be reinforced by a major program of watershed development in rain-fed farming areas. The fourth step is essentially procedural, which Kisans will immediately recognize as being of the utmost importance to their requirements. The National Agricultural Credit Relief Fund will devise a comprehensive relief policy based on the special characteristics of production and the severity of damage
in different agroclimatic zones. Through the rescheduling of loans and waivers of interest and principal in defined circumstances, the credit needs of farmers in different zones will be kept in view. While we have invested astronomical sums of money in land improvement and irrigation, our management of land and water resources has been so poor as to render the benefits secured far below the optimum achievable. We propose to take a number of steps to improve the management of our land and water resources. During the next 5 years, irrigation waters will be made available on an assured basis to an additional 1 crore hectares of land in the command areas of canal projects. The authorities concerned will be held responsible for water reaching the farmers in assured quantities and at the right time. Also, 10 lakh tube wells and dug wells are to be constructed every year, and 5 lakh hectares will be covered annually for the program of desilting and maintenance of village tanks and ponds. Second, the productivity of unirrigated land is to be enhanced through effective watershed development and moisture conservation. This program will extend to 50 lakh hectares during the 8th plan. Third, 25 lakh hectares of Barani land will be reclaimed at the rate of 5 lakh hectares a year. We need not wait for the commencement of the 8th plan to take up these projects. A beginning should be made this year itself. Plasticulture holds vast potential for increasing agricultural productivity. The uses of plastic are many, especially in irrigation, storage, and packing. Existing plasticulture schemes will be substantially expanded. It is proposed to extend incentives for the installation of sprinkler of drip irrigation systems to all farmers. During the 8th 5-year plan, 1 lakh additional sprinkler systems and 1 lakh drip irrigation systems will be installed to optimize the use of scarce water resources. Good seeds are the basic foundation of higher agricultural productivity. The new seed policy is under implementation. The buffer stock being built will ensure that Kisans have access to high quality seeds and planting material at reasonable costs. We are particularly concerned about small, marginal, and SC/ST farmers. With effect from Rabi 1989-90, supply of improved seeds will be ensured. Agricultural research is simply not getting the attention or priority it needs. We are reconstituting the Indian Council of Agricultural Research and I shall take over as its president. We have two major objectives in mind. First, we propose to generate appropriate technologies for each sub-zone of the 15 agroclimatic zones so as to be able to modernize our agriculture in each of the zones. Second, a special time-bound program in research and development of hybrids is being taken up to cover rice, maize, jawar, bajra, arhar, cotton, and oil seeds. Results will be demanded within 5 years and the implementation of the research program will be monitored at the highest level.
to promote the manufacture of agricultural machinery and implements of improved design, particularly those using new and more efficient materials. A special fund is being established to extend credit for the manufacture, fabrication, and marketing of such machinery and implements, as also for the leasing or hiring of such machinery and implements, plant protection equipment, and sprinklers. For adding value of primary produce of the farmer, as also expanding employment opportunities in rural areas, it is necessary to encourage agro-based industries, particularly food processing. Stop. लास्ट लाइन आप लिखेंगे और इसको करने के बाद जब इसकी प्रैक्टिस आप करिए, प्रैक्टिस करने के बाद आप इसको दोबारा से देखिए कि क्या मैं कोई वर्ड मिस कर रहा हूं. इफ यू आर मिसिंग द वर्ड्स तो फिर वहां पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है. तो वर्ड्स को मिस नहीं करना, कंसंट्रेशन पूरी रखनी है. वेन एवर यू आर गेटिंग द डिक्टेशन इन द एग्जामिनेशन हॉल, वन थिंग टू बी नोटिस्ड, आपको हमेशा क्या यार वट यू हैव टू रिमेंबर देयर कि आपका कोई वर्ड ऐसा है, द वर्ड इज नॉट नोन टू यू. ठीक है, अचानक आपको लगा ये वर्ड मुझे नहीं आता, इट डजंट मीन कि आप उसके पीछे 5-6 वर्ड की जिंदगी तबाह कर दो. नहीं, आप उस वर्ड को छोड़ दो, उसके बाद आगे चलो, क्योंकि वो एक वर्ड आपको या तो बचा सकता है छोड़ना, या आपको पूरा पेपर आपका बर्बाद कर सकता है. तो उस वर्ड के पीछे आपको बाकी वर्ड्स को नहीं छोड़ना, क्योंकि होगा क्या कि वो वर्ड, जैसे फैब्रिकेशन है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ द एग्जाम आप फैब्रिकेशन आपने नहीं जल्दी लिखा, ठीक है, उसके बाद आप सोचने लग गए कि इसके बाद में मुझे कैसे लिखना है. नहीं, ये सब नहीं टाइम वेस्ट करना. फैब्रिकेशन के बाद एंड मार्केटिंग ऑफ सच मशीनरी एंड इंप्लीमेंट्स, मुझे ये लाइन आती है, लेकिन मैं ये क्यों खराब करके आया, क्योंकि मुझे फैब्रिकेशन पे टाइम स्पेंड कर दिया. तो रूल ये कहता है एक वर्ड के पीछे बाकी वर्ड्स की जिंदगी आपने नहीं खानी, आपको आगे चलना है. ठीक है, अब सेकंड आपका रूल क्या कहलाता है कि जैसे आपने मेरे से डिक्टेशन ले ली, ठीक है, नाउ यू आर नोन कि आपकी कौन सी डिक्टेशन है, उसको प्रैक्टिस करो. प्रैक्टिस कैसे करनी है, इफ़ यू वांट टू गेट द हायर स्पीड, मैं आपको बता रही हूँ उसका फॉर्मूला, वो एक अपने मन में संभालो और करो और देखो फिर तुम कैसे प्रैक्टिस पूरी करते हो. प्रैक्टिस को ऊपर लाइन लिखो, पहले एक लाइन लिखो और उसके नीचे उसे 5 से 6 बारी, जितना देखो कि जितना तेल डालोगे दिए में उतना वो जलेगा, 5 बारी लिखो, 8 बारी लिखो, उन लाइनों को नीचे रिपीट करके शॉर्ट हैंड टू शॉर्ट हैंड आपने लिखनी है. शॉर्ट हैंड में ऊपर लाइन लिखो, नीचे शॉर्ट हैंड देखकर उसे लिखो. इससे क्या होगा, यू विल गेट हाई स्पीड. ठीक है, जितनी स्पीड आपकी बढ़ती जाएगी लिखने में, आपके वर्ड्स आपके मन में, आपके दिमाग में बैठने शुरू हो जाएंगे. ठीक है, और उसके बाद आपने उसको ट्रांसक्राइब कैसे करना है, जब आपकी उसकी अनसीन होगी. ठीक है, तो अभी ये आपके लिए अनसीन है, इसको समझिए आपने कहाँ गलती की है, उसको सारे वर्ड्स को आपने समझना है. अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि कौन से वर्ड्स आपको यहाँ पे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोन. ठीक है, चलते हैं उन वर्ड्स की ओर. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले वर्ड से, ये वर्ड आया है आपके पास बेटे, प्रोक्योरमेंट सेंटर्स. ठीक है, तो प्रोक्योरमेंट सेंटर्स क्या होते हैं, जहाँ किसानों को अपने अनाज का सही दाम मिलता है. ठीक है, आपको ऑन दी लाइन पे इसको लिखना है, प्रोक्योरमेंट और सेंटर्स. अब ऑफ दी लाइन नहीं है, ये ऑन दी लाइन है. ठीक है, अब अगला वर्ड आता है इवेंचुअली. ठीक है, तो इवेंचुअली में ये जो यू है इसको हमेशा आपको बना के रखना है ऑन दी लाइन पे. सेकेंडली ई की बिंदी जरूर डालनी है. ठीक है, अब क्या होता है इवेंचुअली, अल्टीमेटली. तो इवेंचुअली आपके वर्ड जब भी आएगा सेंटेंस में, यू हैव टू पुट बोथ द कॉमा. ठीक है, जैसे देयरफॉर का कॉमा डालते हैं वैसे इवेंचुअली का भी कॉमा डालना है, यानी अल्टीमेटली, फाइनली ये डिसीजन हुआ. ठीक है, उसके बाद आता है वर्ड एक्सेस. बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक ही बिंदी आपने जरूर देनी है एक्सेस में. एक्सेस क्या होती है, दैट इज अप्रोच. ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, मैं आपको वर्ड्स बता रही हूँ, आपको वर्ड्स की PDF लिंक में मिल जाएगी, ताकि आपको आपका इंग्लिश में और शॉर्ट हैंड में दोनों वर्ड्स को आसानी से क्लियर कर सकें. इसके बाद इसमें वर्ड आया स्टोरेज फैसिलिटीज. कुछ नहीं करना, फैसिलिटीज को यूं करके बड़ा बड़ा करके हमें नहीं लिखना. क्या करना है, स्टोरेज आ गया. whenever you are getting the word फैसिलिटीज, तो आपको क्या करना है, आपने वर्ड डालना है स्टोरेज, और किसकी है फैसिलिटीज, उसके साथ आपने फैसिलिटीज डाल देनी, बस. F और S से काट दो. ठीक है, उसी तरीके से जैसे अब आता है रूरल रिसोर्सेज, तो ये लो,
रिसोर्सेज, एक ही बिंदी मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, जब भी आपके पास रिसोर्सेज आ रहा है इतना बड़ा रिसोर्सेज डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और इतनी बड़ी फैसिलिटीज़ डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या लिखना है, एफ से काटना है उस वर्ड को, और उसके बाद आपके जैसे अब आता है आपके पास मटेरियल रिसोर्सेज, ठीक है, आ जाओ आर के ऐसे काटा और हो गया मटेरियल रिसोर्सेज, ठीक है, खत्म। अब हम इसको ज़रा मिटा के आपको मैं नए वर्ड्स बताती हूँ। चलिए, अब आगे वर्ड आता है इंपॉर्टेंट, दैट इज अ फेसिड मैनर, ठीक है। तो स्पेलिंग आपने याद रखने हैं, FPHASED, ठीक है। फेसिड मैनर में क्या होता है, यानी थोड़ा थोड़ा करके। फेसिड मैनर क्या होता है, थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। आपने कैसे इसमें आउटलाइन का भेद करना है, फेस्ड नहीं लिखना, फेस्ड की तरह नहीं लिखना, इसे आपको अलग लिखना है, आपको ये नहीं लिखनी, आपको लिखनी है फेसिड, ये ए की बिंदी ई की बिंदी अंदर की तरफ, ताकि आपको स्पेलिंग याद रखें, फेसिड मैनर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम चलते हैं, दैट इज कॉल्ड पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबिलिटी क्या होता है, जो बेकार हो गया वो काम के योग्य नहीं रहा, ठीक है, तो वो ड्यू टू द पेरिशेबिलिटी ऑफ समथिंग, यानी वो यूजलेस है मेरे लिए, तो PR इश डाल के बी को डिसजॉइन कर दो। आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है इसकी, ठीक है, फिर से मैं आपको बता रही हूँ, PR इश और बी डिसजॉइन। अब आता है एक वर्ड टू दिस एंड, मैं ये बताना चाहूँगी, टू दिस एंड का मतलब होता है फॉर दिस पर्पस, और फॉर दिस पर्पस वो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, फॉर दिस पर्पस, इकट्ठा कर दो, अलग अलग नहीं करना। उसके बाद वर्ड है आपका इंस्टीट्यूटेड, इंस्टीट्यूटेड ये अलग करना है, ठीक है। अगर आप नहीं करना चाहते तो और भी, अगर बढ़ना चाहते ये लो खत्म, ईडी के लिए काट भी सकते हो, देयर इज नथिंग न्यू, ठीक है। और अब आपका वर्ड आता है रेक्टिफाइड, रेक्टिफाई आ गया तो आई लगा दो, काट दो बीच में, सॉरी ये तो दूसरा मैंने वर्ड लिख दिया, ये RKF, ठीक है, रेक्टिफाई, इसको काट दो, रेक्टिफाइड हो गया, ओके। अब अगला वर्ड आता है एनस्यूइंग, क्या वर्ड है, एनस्यूइंग, तो एन की बिंदी लगा, यहाँ पे ऊ का वोवल लगा दो। क्या होता है एनस्यूइंग, एनस्यूइंग होता है किसी भी चीज के फलस्वरूप कुछ घटित होना, तो यानी किसी चीज का सब्सिक्वेंटली यानी सक्सीडिंग, उसके बाद होने वाली घटना, ठीक है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपने करना है, ईयर मार्क्ड, ठीक है, ये आपने करना है। ईयर मार्क्ड के बाद अगला वर्ड मैं आपको बताती हूँ, विच इज टू बी वेरी नोटिसेबल, ओके, मैं आपको बताती हूँ ये वर्ड है एक्सक्लूसिवली, ठीक है, स्पेलिंग भी याद कर लेना। फिर वर्ड इसमें आया है स्प्रिंकलर, ठीक है, जो ड्रिप को स्प्रिंकल किया, ठीक है। उसके बाद वर्ड आया है इन एलिजिबल, इकट्ठा कर दो, इनकी बिंदी डाल दो ऑन द लाइन, ठीक है, और यहाँ पे ई की बिंदी डालने से एलिजिबल वर्ड पढ़ सकोगे। वाटर शेड, देखो मैं ये बहुत आसान वर्ड है, वाटर शेड हम कर रहे हैं, लेकिन मैंने इसलिए बताया बिकॉज इट इज अ वन वर्ड है वाटर शेड को जब आप लिखोगे टाइप में, ठीक है। उसके बाद आता है इनहेरेंट, ठीक है, इनहेरेंट आता है, क्या होता है इनहेरेंट, क्या होता है, छुपा हुआ, ठीक है, यानी जैसे हम बोल सकते हैं इंट्रिंसिक, कहते हैं इंट्रिंसिक डिजाइन है ज्वेलरी का, इंट्रिंसिक डिजाइन, जस्ट लाइक इनहेरेंट, यानी उसमें छुपा हुआ बहुत बारीकी से किया हुआ काम जो कि हमें दिख नहीं रहा। रेनफोर्स्ड, रेनफोर्स्ड ये वर्ड आता है, रेनफोर्स्ड वो बोल सकते हैं आपको, री इनफोर्स्ड, ठीक है, यहाँ पे एक बिंदी लगा दो, ओ का वोवल लगा दो, आप आराम से पढ़ लोगे। उसके बाद आता है वर्ड एस्ट्रोनॉमिकल, मैं बोल रही हूँ उसे आप लिखो अपने मन में, कैसे लिखोगे, ठीक है, तो आपने कहना है, अब इसमें आपने कैसे लिखना है, एस्ट्रोनॉमिकल, ठीक है, आउटलाइन की तैयारी करनी है, एस्ट्रोनॉमिकल, ओके। देन द वर्ड क्या है, डिसिल्टिंग, डिसिल्टिंग क्या होता है, डिसिल्टिंग होता है ये आपने ऐसे लिखना है, डिसिल्टिंग क्या वर्ड होता है, तो बच्चे इसका मतलब होता है कि जो एक्यूमुलेटेड सिल्ट और सैंड होती है जो वाटर बॉडी के पास जो इकट्ठी हो जाती है उसको रिमूव करना, उसको रिमूव करना, दैट इज कॉल्ड डिसिल्टिंग। वर्ड का मीनिंग आएगा तो उससे आप और नोन टू हो जाओगे और भागेगा आपका हाथ वहाँ पे, क्योंकि आपको पता होगा वो क्या है, प्लास्टिक कल्चर, बहुत ईजी वर्ड है, ठीक है, प्लास्टिक कल्चर ये वर्ड है। और अब इसके अलावा मैं आपको इसकी PDF भी दे दूंगी जिसको आपने अपने ध्यान में रखना है। तो यहीं पर मैं समाप्ति कर रही हूँ। साथ के साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं धीरे धीरे इसके डिक्टेशन को थोड़ा सा और भी लेंदी करने की कोशिश करूँगी ताकि आपके हाथ वहाँ पे कभी भी थके ना। जितना आप यूज टू हो जाओगे उतना आप डिक्टेशन को पूरा कर सकोगे, ठीक है। तो इसकी करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट डिक्टेशन डालेंगे और मुझे बताना कि आपने प्रैक्टिस कर ली, प्रैक्टिस के बाद उसको रेडी करना। ओके।
Till then, all the best.